everyone, welcome back to the Political Science lecture series on Near Peer. Today we're going to discuss the topic of nationalism. ये एक ऐसा मौजू है जो कि हमने पहले इब्तिदा में जब हम नेशन स्टेट का कौमी रियासत का तस्वुर कवर किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे नेशन के फीचर्स और वो किस किस तरीके से नेशनल आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. One of the associated notions with nation state is the idea about nationalism. It is the idea about it is something that we intuitively understand, we intuitively feel as well. जब ये cricket match होता है और हम सब we're passionately cheering for our cricket team and in any such event we're supporting our country, we intuitively understand and feel this concept, but we'll try to discuss this topic in along political lines और उसको हम उसकी specific nuances को discuss करने की कोशिश करेंगे. So nationalism in terms of its definition is broadly an ideology that is premised upon individuals' loyalty and devotion to the nation state, which surpasses individual or group interest, and it surpasses individual identities as well. So in terms of nationalism, it is a collectivist feature. That is to say कि ये इंडिविजुअल की जाती मुफादात से बढ़ के अपनी कौम की मफाद को उसके ऊपर तरजीह देते हैं. Nationalism there are multiple features. The first feature is generally that there is one government. So basically nationhood के concept के अंदर हमेशा ये चीज होती है कि every nation continue, especially since the dawn of the nation state, every nation has continued to hold one country. जब भी नेशनलिज्म एग्जिस्ट करता है उस नेशनलिज्म के साथ एक एसोसिएटेड आइडिया ऑफ गवर्नमेंट जरूर होता है. आइदर दैट योर सपोर्ट फॉर योर गवर्नमेंट एग्जिस्ट और देयर इज एन एस्पिरेशन दैट यू वांट टू हैव अ गवर्नमेंट अराउंड. अगर एक कुछ बहुत सारी हमने जिस तरह पिछली दफा पे डिस्कस किया था, कुछ ऐसी नेशन स्टेट्स हैं कि वो नेशंस तो हैं मगर उनके पास रियासत नहीं है, उनके पास गवर्नमेंट नहीं है, बट द एस्पिरेशन टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट within that nation exists. So hence it may be a reality of the past, present, or just an ambition of the future. The second is this idea about group feeling. एक sense of unity और commonality जो है वो exist करती है हमेशा nationalism के concept के अंदर. So it could be derived from, as we discussed earlier in the nation state, that nations could be constructed around culture, around religion, around a collective sense of history, around common aspirations. So things that bind people together. The thread should run across the social fabric of the society. The third is the important point of distinction. Distinction से मुराद ये है कि nationalism हमेशा divide करता है. Not using the negative connotation, but generally वो exclusive होता है. So it divides societies into us versus them. ठीक है, तो जिस important factor के around national identity construct की जा रही है उसके corresponding जो nationalism है वो उस national identity के उस factor से belong ना करने वाले लोगों को हमेशा एक्सक्लूड करेगा. सो फॉर इंस्टेंस अगर किसी की नेशनल आइडेंटिटी किसी मुल्क की उसकी एथनिसिटी के गिर्द घूमती है तो उसका नेशनलिज्म वो उस शख्स को जो उस एथनिसिटी से बिलोंग नहीं करता उसको उसमें से नहीं समझेगा. सो फॉर इंस्टेंस म्यांमार एज अ कंट्री जिसका नेशनल आइडेंटिटी बिलोंग्स ऑन एथनिसिटी और वो रोहिंग्यास को एथनिक बर्मीज नहीं मानते और उनको बंगाली माइग्रेंट्स मानते हैं, हेंस Myanmar and Burmese nationalism excludes Rohingya from that sense of group, from that community, and ostracizes them. So that's the distinction that nationalism always creates within peoples. The fourth is the defined territory. There's always a territory around which nations are concentrated. That's fairly a simple point. The fifth is a common interest. That nationalism is always driven by a certain collective sense of interest, which is you can also call national interest. That there are certain common interests that every country have. There are certain collective friends, collective enemies that they have, that is driven by their sense of experience of history as well. So for instance Pakistan India के context में देखें तो Pakistani nationalism always necessarily entail that there is dislike for India because India poses an existential threat to Pakistan. Hence there's this common consensus about national interest in that regard, using the traditional understanding of the concept, not necessarily saying that everything
everything anti-India or everything that is defined through nationalistic lens is correct. I'm just pointing out that how things are happen to be in the reality. There are various tools and symbols which are used in order to propagate nationalism. Nationalism manifest किस तरीके से करता है, nationalism को परपिट्रेट कैसे किया जाता है, उसकी मैनिफेस्टेशन किस तरीके से होती है, तो उसके लिए मुख्तलिफ सिंबल्स और मुख्तलिफ टूल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं. वन ऑफ देम इज द फ्लैग. तो नेशनल फ्लैग जो है आपका, वो आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है. सो पाकिस्तान का जो चांद सितारा यूज किया जाता है उसके अंदर वो एक इस्लामिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो उसके क्योंकि दिस इज अ सिंबल ऑफ इस्लाम एज वेल, हेंस इट्स कॉमन इन मैनी flags in many countries like Turkey, or white represents the minorities of the country. So आपके जो national identity है उसी की reflection एक किस्म की आपकी flag के अंदर manifest होती है. The second important instrument for propagation of nationalism is schools. Schools हमारी national identity को shape करते हैं because उसमें आपको आपकी तारीख बताई जाती है, आपके leaders बताए जाते हैं, आपको सिखाया जाता है, condition किया जाता है एक certain version of what you should think about yourself, what you should think about your nation, what you should think about other nations, what you should think about the world. So hence schools are important agents of propagating nationalistic narrative. Here propaganda is not used in negative connotation. It generally means conveying a specific kind of information. The third is mass media, of course. न्यूज़पेपर के जरिए, आप किताबों के जरिए, इन सब के जरिए पेट्रियटिज्म, नेशनलिस्टिक नैरेटिव्स वगैरह परपेट्रेट किया जा सकता है. खास तौर पे जो स्टेट ओन्ड मीडिया है, स्टेट ओन्ड मीडिया खास तौर पे नेशनलिस्टिक नैरेटिव्स को परपेट्रेट करने के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंटल साबित होता है. The fourth is material culture. Material culture से मुराद आपकी वो तमाम culture के aspects हैं जो which are tangible, which you can see, which you can touch, which you can feel. These include buildings, roads, universities, your square, public squares. तो इनके आप नाम अपने nationalistic heroes के नाम पे रखते हैं. So you would never name your important places in the country जो कि आप कन्वेंशनली आपके मुल्क में अच्छे नहीं समझे जाते हैं, आपके नेशनलिस्टिक नैरेटिव के साथ अलाइन नहीं करते हैं. अमूमी तौर पे जो नेशनल हीरोज हैं, जो योर वर्जन, व्हाटएवर योर वर्जन ऑफ हिस्ट्री टेल्स यू आर द हीरोज, उनके नाम पर आप रखते हैं और वो आपके नेशनल सेंटिमेंट को जो है वो कंटिन्यू करते हैं. फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज द existence of national holidays. So जो आपके हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको नेशनल हॉलीडेज और उनके ऊपर जो सेलिब्रेशंस या कमेमोरेशंस की जाती हैं ताकि आपकी वो नेशनल आइडेंटिटी स्ट्रेंथन रहे, आप उसे रीलिव कर सकें और आप you can continue to believe in that nationalistic ideal. So this is also an important tool which is used in order to perpetrate nationalistic narrative. Now there are two theories on nationalism from an academic point of view. There's one theory which is perennial theory and the second theory which is modernist theory. The perennial, by very nature of the word perennial, means that nations are very old. ये थ्योरी बिलीव करती है कि जो नेशंस हैं वो नेचुरल हैं, वो ऑर्गेनिक हैं और दे आर वेरी ओल्ड एंड दे आर बेसिकली एथनो कल्चरल ग्रुप्स जो कि हिस्टोरिकली थ्रू मिलेनियम्स एंड फॉर सेंचुरीज ये इवॉल्व होके आई हैं और वो आपकी इवेंचुअली हैव कॉन्स्टिट्यूटेड नेशंस. और वो हम आप नेशंस के लिए कोई टाइम स्ट्रेच नहीं कर सकते, ये शुरू से एक बड़ा लंबा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन प्रोसेस है. और जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स क्रिएट हो रही हैं ये उन्हीं हिस्टोरिकली जो हम नेशंस एग्जिस्ट करती हैं उनकी मैनिफेस्टेशन है, उनकी रिफ्लेक्शन है. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नेशंस आर वेरी ओल्ड और जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं वो सिर्फ अपनी उसी ओल्ड ओरिजिनल जो उनकी रूट्स हैं उसको मैनिफेस्ट करती हैं, उसको रिफ्लेक्ट करती हैं. तो ये कॉन्सेप्ट है. सो फॉर इंस्टेंस एज एन एग्जांपल, हंगेरियन एम्पायर के अंदर आपकी मल्टीपल नेशंस एग्जिस्ट करती थी विच वाज अननेचुरल. हेंस जब आपकी ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर टूटी तो हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जो कि दो डिफरेंट नेशंस थी वो उसके अंदर से इमर्ज की. और जब चेकोस्लोवाकिया टूटा तो उसके अंदर चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया निकल के सामने आया. तो ये चेक रिपब्लिक और ये स्लोवाकिया, ये वाली नेशंस वो ओरिजिनल नेचुरल नेशंस थी जो कि इतने सालों से और सदियों से बनी. फिर उसके बाद
by virtue of wars, by conquest and everything, they merge together. But then again, they have come in their original shape. So according to this theory, nations are very old. Nation का concept natural है, organic है, और modern nation states are reflecting the same old ethno-linguistic or ethno-cultural groups. The second theory is the modernist theory. According to this theory, nations are not old. There used to be no concept of nation before industrialization in particular and spread of mass media in particular, और जब से printing press से पहले उसका इतना आइडिया ही एग्जिस्ट नहीं करता था. तो मॉडर्निस्ट थ्योरी के मुताबिक nations are products of modernity. They are not natural, they are not organic, they are not old. They are particularly the result of modern conditions like industrialization, mass media, public schooling. इन चीजों ने nation के concept को and hence nationalism को artificially construct किया है. So there is nothing natural about it. ठीक है? They are basically political entities of legally equal citizens that it is not important. जैसे यहाँ पर ethno-cultural groups और kinship extended kin groups के तौर पे देखती है ये theory nations को. This theory sees people, nations only as legally equal citizens having a politically sovereign land. So इसके अंदर एक important चीज है कि nationalism is consciously constructed by the power elite in any given society. तो इसके अंदर बहुत popular जो दो theorists हैं इस theory के अंदर, one of them is Eric Hobsbawm. And the other one is Benedict Anderson. Eric Hobsbawm की theory, which is derived from his book called The Invented Tradition as well, and that's what the theory calls itself. Be sure to quote the references because इससे आपके marks ज़्यादा आएंगे. That tradition is invented by the elite. That जिसको हम ट्रेडिशन कहते हैं, जिसको हम रवायात कहते हैं, जिसको हम चीजें कहते हैं कि ये बड़ी देर से एग्जिस्ट करती हैं और ये हमारी रवायात हैं जो कि सदियों से हमारे पास हैं, वो एरिक हॉब्सबॉम के मुताबिक वो भी एक नई इन्वेंटेड चीज है. सो वी आर डिल्यूजन्ड. हमें एक इल्यूजन दिया जाता है कि हमारी वैल्यूज बहुत पुरानी है, जबकि वो बहुत पुरानी नहीं, वो हमारी एलीट्स ने क्रिएट की अंटिल वेरी रिसेंटली, और उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, हमें इस तरह कंडीशन किया गया कि हमें वो डिल्यूजन दिया गया कि वो बहुत पुरानी है. ठीक है? सो ट्रेडिशंस आर इन्वेंटेड और आप उसकी वजह से आप समझते हो कि आपकी वैल्यूज बहुत पुरानी है. सो फॉर इंस्टेंस देयर आर सम पॉपुलर मिथ्स एंड पॉपुलर कंसेप्शंस अबाउट certain features of certain nations जो कि also invented traditions which objectively have no place in history. So for instance, martial arts of Japan, everyone even in Japan और दूसरे एरियाज में भी दुनिया के लोग भी ये समझते हैं कि मार्शल आर्ट जापानीज कल्चर में हमेशा से एग्जिस्ट करता है और वो उनका एक बड़ा डिफाइनिंग फीचर है, जबकि ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री बताती है कि दैट इज नॉट नेसेसरली ट्रू. Same goes with the Highland myth of Scotland. एक noble savages की उनकी image Scottish identity को shape करती है about these people who were very adventurous but at the same time very cultured as well. The third is this Eurocentric depiction of Jesus Christ. मतलब Jesus was belonged to Nazareth in the Middle East. He should look Middle Eastern, but all the statues of Jesus are very white, which makes him look like a European person. It's because यूरोप ने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को embrace किया था, तो उसी image के अंदर उनके statues वगैरह को भी carve करना शुरू किया गया. So this is the idea that in order to create a particular narrative, basically जो आपकी elites हैं वो ट्रेडिशंस को इन्वेंट करती हैं और उनको लोगों को एक डिल्यूजन देती हैं कि ये हमारे साथ हमेशा से एग्जिस्ट करता है थ्रू स्कूलिंग, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मास मीडिया, इन सब के जरिए, जो कि असल में उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता है. इसी तरह बेनेडिक्ट एंडरसन की किताब इमेजिन कम्युनिटीज के उसने अंदर लिखा है कि नेशंस आर इमेजिन, यानी कि हमारे जहन में सबकॉन्शियसली हम अपनी कौम को इमेजिन करते हैं और नेशंस ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट नहीं उस तरीके से हमें नजर आ रही होती. बिकॉज it is imagined because we never meet every person from our nation. हम हर एक पाकिस्तानी से नहीं मिले, हमारे पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे ज़हन में एक इमेजिन्ड कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तानी की, जिसको हम अपने ज़हन में इंटुइटिवली समझते हैं कि कैसी एग्जिस्ट करती है. सो जो प्रिंट मीडिया है, इसने सबसे पहले
जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई, फिर कैपिटलिज्म की वजह से प्रिंटिंग मशीन्स कॉमन हो गई, बुक राइटिंग कॉमन हो गई, इसके जरिए कम्युनिटीज इकट्ठा होना शुरू होंगी और एक सेंस ऑफ कॉमनैलिटी एग्जिस्ट करना लोगों के दरमियान शुरू हो गई। इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है कि जब बाइबल की ट्रांसलेशन हुई इन द लोकल लैंग्वेजेस, इन द वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, जिसकी वजह से खास एरियाज की लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन होना शुरू हो गई और वो लैंग्वेज एक जैसी लैंग्वेज बोलना शुरू कर गए और एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग सिमिलर कल्चरल बिलीव्स रखने लगे, तो एक इमेजिन कम्युनिटी के तौर पे अपने आप को देखने लगे। इसी तरह फ्रेंच आइडेंटिटी भी, फ्रांस की यूनिफिकेशन भी आइडेंटिटी इस चीज पे प्रेमिस थी, क्योंकि फ्रेंच वाज नॉट द लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन बाय एवरी person in France in the Middle Ages. It was the language of Parisian फ्रेंच, पेरिस में बोल रहने वाले लोगों की जुबान फ्रेंच थी। इट वाज अ हाई एंड लैंग्वेज, कंसिडर्ड अ हाई एंड लैंग्वेज। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब न्यूज़पेपर्स फ्रेंच में छपना शुरू हो गए तो दूसरे एरियाज के लोगों ने भी फ्रेंच पढ़ना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंच बिकेम द लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ द होल फ्रांस। उसकी वजह से एक शेयर्ड सेंस ऑफ कॉमनैलिटी एग्जिस्ट करना शुरू कर गई लोगों के दरमियान, दैट वी आर ऑल फ्रेंच पीपल and everyone who speaks French belongs to this particular unique group, जिसको उसने फ्रेंच, जो लोगों ने फ्रेंच नेशन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से डिराइव होना शुरू हुआ। सो बेसिकली द आइडिया बीइंग दैट यू डोंट एक्चुअली मीट और नो एवरी पर्सन फ्रॉम योर नेशन, बट यू नो दैट इट इंटुइटिवली एक्सिस्ट्स, इट्स इन योर हेड, you know in your head that they exist. So that is something that Benedict Anderson calls imagined communities. तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस और हिस्टोरिकल फीचर्स और historical nuances हैं in the idea about nationalism and how it has evolved. There are two predominant theories, the perennial theory and the modernist theory. To be fair, there's some grain of truth to both these theories, but modernist theories have more persuasion in them because they have a plethora of academic study has pointed out कि ये concept of nationhood was actually the product of modernity, कि ये जो nations people didn't used to even know anyone beyond their villages, let alone towns and provinces. Northern Italy में रहने वाला Southern Italy को नहीं, में रहने वालों को नहीं जानता था in the Middle Ages, and ना he didn't give anything about it, he didn't care at all either. लेकिन प्रिंट और प्रिंटिंग प्रेस की वजह से और प्रिंट मीडिया के कॉमन होने की वजह से, आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की वजह से एक कॉमनैलिटी जो है वो आना शुरू हो गई, एक सेंस ऑफ नेशनहुड होना शुरू हो गई। फिर जब पब्लिक स्कूलिंग शुरू हुई उसके अंदर तो फिर आपने सारी की सारी जनरेशन को एक जैसी बातें सिखाना शुरू कर दी और फिर वो सब एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी वो लोगों में आना शुरू हो गई। सो that is all for today. In the next lecture, we'll discuss other important topics related to political science. Till then, take care. See you. Allah Hafiz.